Hi children, today we are going to start the lesson number 14, Bharat Hai Mera Ghar. It's a kavita hai. It's a small kavita. From this kavita you will get some information from in our nation, India. भारत से प्यार करने वाली एक छोटी बच्ची इस कविता का केंद्र बिंदु है। इस कविता का आलापन मैं करती हूँ। आप जब कीप योर फिंगर ऑन द वर्ड एंड लिसन केयरफुली। रानी बिटिया चली घूमने दिल्ली से आगे बढ़, चलते 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 पहुँच गई चंडीगढ़। चंडीगढ़ से जयपुर पहुँची, जयपुर से रामेश्वर, रामेश्वर से चलते चलते लौट चली आई घर। माँ ने पूछा रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर, बिटिया बोली कहीं नहीं माँ मेरी घर के अंदर। घर के अंदर रानी बिटिया ऐसा झूठ सरासर, झूठ नहीं माँ सच कहती हूँ भारत है मेरा घर। In this poem there is no much meanings and very small chapter. You can make any other tune, no problem. But when you read in the tune, it will make you little more interest towards the chapter. That's why I given tune for you. रानी बिटिया चली चली घूमने दिल्ली से आगे बढ़. Rani is the name of the small girl. Rani started her journey from दिल्ली. आगे चलने शुरू किया. कहाँ से है? दिल्ली से अपनी सवारी शुरू किया है. बिटिया मीन्स बेटी, स्मॉल चाइल्ड. चली घूमने, घूमने के लिए कहाँ घूमने चले जाते हैं? भारत, पूरा देश घूमने के लिए. She want to see all the places in India. That's why she went for a journey. दिल्ली से आगे बढ़. और she started her journey from दिल्ली. चलते 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 पहुंच गई चंडीगढ़. She was walking and walking. Where she reached? She came Chandigarh. You heard that state, Chandigarh. There she reached. चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची. चंडीगढ़ से धीरे धीरे चलकर कहाँ पहुंची? जयपुर. Where is Jaipur? Rajasthan. Rajasthan, Jaipur. Jaipur is another name also there. You know the name? Pink City. You heard that. Jaipur city is called Pink City. चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची. जयपुर से रामेश्वर. जयपुर से चलते चलते रामेश्वर पहुंच गए. रामेश्वर से चलते चलते लौट चली आई घर. Again she started moving from forward. She slowly moved, walking and walking. She reached again, coming back to her home. माँ ने पूछा रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर. Suddenly mother asked, where you went? कहाँ गई थी बाहर? Where you went out? बिटिया बोली, what's the child replied, कहीं नहीं माँ. I didn't went anywhere. मैं ही घर के अंदर. I was here in this home. घर के अंदर रानी बिटिया ऐसा झूठ सरासर. Oh, you started saying lie to their mother, and mother is very angry with her. And I didn't see you anywhere in this home. That's why I asked you where you went. You are telling you didn't went anywhere. You were in the house itself. But mother is saying, don't say lie to me. ऐसा झूठ सरासर. Completely you are telling lies. झूठ नहीं माँ. तो बेटी क्या कहती है? झूठ नहीं है. This is not a lie. आज सच कहती हूँ. I am telling the truth. भारत है मेरा घर. And she is considering the whole nation as like a home. That's why she is not feeling she went anywhere. She felt like she is walking in her home itself. See, भारत देश ही हमारा घर है. What is the moral of this poem? भारत देश ही हमारा घर है. Our country, India, is our home. The child is considering India as her own home. We need to consider the whole India is our mother also. We are in India, Mother India. The same feeling we must
be to the all nation, because India, we need to be proud about India, and nationality we need to show, the patriotism we need to show towards our nation. In this poem is over. I will show you some meanings of this chapter. शब्दार्थ हैं बिटिया बेटी डॉटर, माँ माता मदर, सरासर बिल्कुल कंप्लीटली, घर गृह होम, झूठ असत्य अलाई, सच सत्य ट्रू. These are the meanings, hard words from this chapter. All of you sing this song once again. Now we can sing it once again after them. रानी बिटिया चली घूमने दिल्ली से आगे बढ़, चलते 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 पहुंच गई चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची, जयपुर से रामेश्वर, रामेश्वर से चलते चलते लौट चली आई घर. माँ ने पूछा रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर, बिटिया बोली कहीं नहीं माँ, मैं थी घर के अंदर. घर के अंदर रानी बिटिया ऐसा झूठ सरासर, झूठ नहीं माँ सच कहती हूँ, भारत है मेरा घर. I hope you enjoyed this poem. Anyway, it's a very simple poem. You need to read 2-3 times, then you will easily understand. Make another tune if you want. Thank you, children.